तो अभी हम लोग यहाँ पे एक नेक्सॉन में एंड्रॉइड अपग्रेडेशन एंड स्पीकर मॉडिफाई हम लोग कर रहे हैं। कंपनी जो स्पीकर रख के आती है वो बहुत बेसिक होती है, उसमें कोई पंच नहीं होता है। जो स्पीकर्स भी हम जो उन लोग हरमन के बोलते हैं, जो बोस के बोलते हैं फॉर ऑल द अदर ब्रांड्स, इट इज़ नॉट दैट केपेबल टू गिव यू द मिनिमम अमाउंट ऑफ बेस फॉर द इंडियन म्यूजिक ऑफ टेस्ट। सो आई शो यू हियर। ये स्पीकर इंस्टॉल हो गया अभी इसमें। Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? आगे में जो लग रहा है that is a component speaker and here में we have installed component speaker. Are you with me? नेक्सॉन 2018 मॉडल। इसमें हमने यहाँ पे आपका जो ओल्ड DRLs थे कंपनी के, दैट इज़ विदाउट दी LED स्ट्रिप, इसमें खाली एक पेंट होती है यहाँ पे, तो वो निकाल के इसमें हमने फॉग लाइट, दैट इज़ LED फॉग लाइट एंड इंटीग्रेटेड DRL ब्रांडेड है इसमें ये चीज़। पहले वाले में जो थे इसमें क्रोम गार्निश भी आती थी नहीं, इसमें आपका क्रोम गार्निशिंग भी आपको मिला इसमें। Fitting of the Nexon DRL. See the indicator. So this is the Nakamichi Android which I have installed in this Tata Nexon. ये जो Android है, this is genuine Japanese product, available in Siliguri at Royal Motors. So you can see there's no lag in it. बहुत स्मूथ है, आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर में आपको मिलता है एंड फुल आपका HD डिस्प्ले आएगा। मेरा कैमरा अभी जो है वो HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा उसमें, लेकिन दिस इज अ HD क्वालिटी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट गोज अप टू, इफ आई शो यू इन यूट्यूब, वन सेकंड, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरनेट, आई जस्ट इट्स इन HD स्टूडियो। इफ यू सी इनबिल्ट आपको यूट्यूब उसमें मिल जाएगा। सो इट्स टोटल एंड्रॉइड सेटअप विद HD। इफ आई ओपन अप अ वीडियो हियर, द फर्स्ट वीडियो व्हिच आई सॉ, and according to net quality, if I zoom it, you can see it goes up to the best quality which I gave. That's the highest I'm running on it. So according with the net speed, it can play for the HD quality. This is the packaging it comes in. Nakamichi 5010 model, available in Siliguri. So ये आप देख सकते हैं कि कंपनी से जो लगी हुई डैम्पिंग आती है, जो साउंड प्रूफिंग जो कंपनी वाले बोलते हैं, इट्स अ नॉर्मल गत्ता का शीट होता है ये। एंड हियर इज व्हाट वी डू, उसको प्रॉपरली साउंड प्रूफ करने के लिए और डोर को थोड़ा सा हैवी वेट डालने के लिए वी इंस्टॉल this kind of damping to it. It's a metal sheet, 2.2 mm Vibromax की रशियन कंपनी है ये। तो ये आपको पूरा डोर में आपका लग जाता है एंड it provides a vacuum to the bass which this Hertz speaker produces. तो इसमें मैंने आगे में इसमें कॉम्पोनेंट लगाया गया एंड पीछे में डैम्पिंग हो गई है और डोर पाइप भी लग गया इसमें। तो इसमें भी आपका डैम्पिंग एंड कोएक्सियल स्पीकर आपको लगा है इन दी ओरिजिनल स्पीकर पोजीशन। So you can see this thing. ये इसका डोर पाइप्स में लग जाएंगे अभी। तो जो भी काम है प्रॉपर वायर टू वायरिंग काम है, कुछ भी क्लिपिंग एंड कटिंग हुआ नहीं है।